Hello students, you all are welcome in grade 7, chapter number 12, algebraic expressions. Let's begin from page number 229, introductions. Now students, the first term expression, as you have studied in your previous standard algebraic expression chapter, x plus y 2x plus 2, 3x square plus 5x, 7x minus 2, 3x square y square, 8x plus 5y minus z, 7xy, 8xy, 7x square y square plus 2xy plus 8, etc. These all are algebraic expression. Students, do you know these all expressions, they are one, two term. This is first term, second term, having separated by plus sign or sometimes minus sign. You see these x square, y square, these all are variables, z. Okay, so this algebraic expression which is consist of variables, sign plus or minus, and numbers. Okay, so algebraic expressions consist of a combination of variables, numbers, plus or minus sign form term, right? And these terms are added to form expressions. Say for example, let's you see here 3x square y square plus 7x minus 9. Here how many terms are there? Term number 1, term number 2, term number 3. 3 terms are given. Now you see in first term 3x square y square. Second term plus 7x. Third term minus 9. Students, please remember, if the term having no variables, it is known as constant term. Okay, now factors of the term. Okay, let's we talk about the factors. So factors, you see in first term 3x square y square. So 3 ones are 3. Only one factor is there. And x square. X square means how many times? X multiplied by x. Right? So variable factor x multiplied by x. Similarly y square variable. Its factor y multiplied by y. So what is the total factor of this first term? 3 multiplied by x multiplied by x multiplied by y multiplied by y. In second term students, 7x is the second term plus 7x having factor 7 multiplied by x. Now term number 3, that is constant term. Minus sign with, take a term with always sign, correct? And this minus sign means 9 factor is 3 multiplied by 3 with minus sign. So it is constant term I have written. Now coefficients, another point. Now coefficient means what? Numerical factors are said to be coefficient. Say for example, you see 7xyz minus 8x square y square plus 3y. In this, you have given how many terms? 3 terms. Now, in term 7xyz, the coefficient is plus 7. You have to take coefficient always with its sign. You see 7xyz. So, what is our definition? Numerical factors are said to be coefficient. So, here the numerical number, that is 7 is there. So, 7 is the coefficient of 7xyz term. Now, here in second term, you will find the number is minus 8. So, minus 8 is the coefficient of this term. In this minus 8, what is the factor of 8? 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 2s are 4 2s are 8. So, minus 8 is the coefficient, or you can say minus 2 multiplied by 2 multiplied by 2. According to our definition, numerical factors are said to be coefficient. Similarly, in third term, the coefficient is plus 3. So, constant term means without variable term. Term having no variable, that is constant term. Now from textbook you see this is 4x square minus 3y, 3xy.
The term 4x square and minus 3y are there, minus 3xy are there. Now factors 4 multiply by x multiply by 2. ये 4 का आप फैक्टर कर दो, 4 का 2 multiply by 2 नहीं किया लेकिन आप कर सकते हो. Here minus 3xy, you see here the term take with its sign. So minus 3 into x into y. So what is the coefficient? In first term the coefficient is 4 and in second term the coefficient is minus 3. Next you see another one. Expression 5xy plus 10. How many total term of this expression? 2 terms. Okay. So first term that is 5xy and the next term that is plus 10. In 5xy what is the factor? 5 multiplied by x multiplied by y. In second term the factor is 10. Right. So the factor is 5 multiplied by 2 of 10 factors. Coefficient in first term coefficient is 5, in second term the coefficient is plus 10 or plus 5 first term and plus 10 second term. Always you speak the coefficient with that sign. Try this. Identify the coefficient of the terms of the following expression. पहला expression है 4x minus 3y. In that the coefficient is plus 4 and minus 3. Second expression a plus b plus 5. The coefficient of first term that is 1, nothing is there, only a is there, means 1a is there. In second 1b is there, so second coefficient 1 and third coefficient plus 5. Now in expression 2y plus 5, the first term coefficient is plus 2 and second term coefficient is plus 5. And last one expression 2xy, the coefficient is plus 2. Dear students, move to example number 1. Identify the following expressions. Terms which are not constants give their numerical coefficient. You see, xy plus 4, 13 minus y square. Let's see in detail. Here you see page number 232. This is the solution of this example number 1. Now the first one, that is xy plus 4 expression is there, right? In that term which is not a constant, right? So xy it having a variable, means the constant term is here 4. Now here xy, so that numerical coefficient is plus 1. 13 minus y square, 13 is a constant term, right? तो यहाँ हमको term कौन सी लिखनी है? जो term में constant नहीं है वो, जो term में constant है वो नहीं लिखना है. So this is constant term 13 minus y square having the coefficient is minus, nothing is there means minus 1. Here nothing is there means plus 1. Now 13 minus 5 plus 5y square. In this minus y having the term 13, that वो तो constant term है, minus y variable है और उसका coefficient है minus 1. 5y square में plus 5. Now in fourth expression 4p square q minus 3pq square plus 5, constant term is 5, वो नहीं लेना है. चलो 4p square q में coefficient क्या है? न्यूमेरिकली लेना है तो 4 और minus 3pq square में coefficient क्या है? minus 3. So like this way you can find out the coefficient of the term. Look example number 2. What are the coefficient of x in the following expression? यानी कि जहां जहां जो टर्म में x है उसका ही आपको कोएफिशिएंट लिखना है. देखो 4x माइनस 3y, इसमें x वाला कोएफिशिएंट, x वाली टर्म कौन सी है? 4x, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 4 बस. सेकंड में 8 माइनस x प्लस y, इसमें x वाला कौन सा है? ये रहा बीच में माइनस x, तो इट्स कोएफिशिएंट इज माइनस 1. ये y स्क्वायर x है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? y स्क्वायर, बराबर. Here what is the coefficient of x? Here minus 5 in this last expression. So this is the solution. You see, इसमें only you have to find out the x coefficient, and second में आपको only you have to find out the coefficient of y. देखो ये पहले में कौन सा है? 4x minus 3y, तो क्या है? minus 3. यहाँ y का coefficient plus z, यहाँ y का coefficient z square. ये देखो बराबर. ओनली y की कोएफिशिएंट लेना है. ये तो x का कोएफिशिएंट है, ये तो y का माइनस 3y, तो माइनस 3. y z, तो z के साथ क्या है? सॉरी y के साथ क्या है? प्लस z. यहाँ y के साथ क्या है? z स्क्वायर.
Okay, so like this way you can do. Next term, like term. Like term means what? A term has same variable and same powers. You see, 3x square y square minus 5x square y square plus 10x square y square. Here I am giving you three terms. In these three terms, you see, you observe a term has same variable same है. देखो x y है, यहाँ भी x y है, यहाँ भी x y है. सेम वेरिएबल एंड पावर, ऊपर पावर देखो वो भी 2 2 है, यहाँ भी 2 2 है 2, तो इसको बोलते हैं लाइक टर्म. यू सी, अनलाइक टर्म्स, यहां साइन कोई भी है, आपका तो वेरिएबल एंड पावर सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट या साइन जो भी है वो चलेगा. अनलाइक टर्म जस्ट वाइस वर्सा. A term has not same variables and same powers. You see, 3x square y square, 7x square y square z. देखो यहाँ वेरिएबल बदल गए, यहाँ z है, यहाँ z नहीं है. यहाँ देखो 8abc minus 9ab, यहाँ c है, यहाँ c नहीं है. तो these all terms are unlike terms. A term has not same variables and same powers. पावर्स भी देखो सेम नहीं है, यहां पावर सेम है लेकिन वेरिएबल अलग है, यहां पावर सेम है लेकिन वेरिएबल अलग है, यहां वेरिएबल सेम है लेकिन पावर्स अलग है, तो नहीं चलेगा. पावर्स भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए. ओके, सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस. हियर यू सी, ग्रुप द लाइक टर्म टुगेदर फ्रॉम द फॉलोइंग. चलो 12x का लाइक टर्म क्या है? देखो ये 12x लाइक टर्म है, -25x लाइक टर्म है, और x, ये तीनों आएंगे साथ में. देखो ये कांस्टेंट टर्म 12, यहाँ दूसरा कांस्टेंट है, यस है, क्या है? 1. चलो फिर y वाला, हाँ 1 भी है, 12 भी है, -25 भी और 1. दिस इज लाइक टर्म, कांस्टेंट लाइक टर्म. x वाला लाइक टर्म. फिर y वाला देखो, ये -25y और 12y और y, these are like terms. So like this way you can group together like terms. Now the next one, monomial, binomial, trinomial and polynomials. Right? It's very easy. An expression which contain only one term, it is monomial. An expression which contain two terms, that is binomial. An expression which contain three terms, that is trinomial. Or polynomial means what? An expression with one or more term, that is polynomials. Okay, so monomial means one term, binomial means two term, trinomial means three terms, and more than one terms, that is polynomial. Try this. Classify the following expression as a monomial, binomial and trinomial. Please student note down. चलो a, पहले ये a है, क्या है? मोनोमियल. a प्लस बी, दो टर्म है, बाइनोमियल. ए प्लस बी, ट्राइनोमियल, तीन टर्म है. ए प्लस बी -5, 1 2 3 4, पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 2 3 4, 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल. एक्स वाई मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल. एक्स वाई प्लस 5 बाइनोमियल. 5x² - x + 2, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल. 4pq - 3q + 5pq, 5p, दैट इज ट्राइनोमियल. 7 मोनोमियल, एक ही टर्म है. 4m - 7n + 10, ट्राइनोमियल. 4mn + 7, binomial. Okay, student, you observe this example number 3. State with reason which of the following pairs of terms are like terms and which are not like term. You see, pair 7x and 12y, right? 7x फैक्टर क्या है? 7 and x, वो 12 and y. Algebraic expressions, फैक्टर्स सेम और डिफरेंट. फैक्टर्स कौन से है? डिफरेंट है, राइट? सो लाइक और अनलाइक टर्म है, इट इज अनलाइक टर्म बिकॉज वेरिएबल भी डिफरेंट है. द वेरिएबल्स इन दिस टर्म्स आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज अनलाइक टर्म. हमारा डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल्स आर सेम एंड पावर्स आर सेम. आप सेकंड में देखो 5 15x 21x, वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म. थर्ड में देखो 4ab ba है, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, लाइक टर्म. ऑब्जर्व इन फोर्थ वन 3xy 3x. देखो यहाँ 3xy है और 3x है, वेरिएबल अलग अलग हो गए. एक में xy है, एक में x ही है,
So the variable y is only in one term. So they are unlike term. 6x square 9x square y, देखो वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन पावर्स उसके अलग अलग है. पहले में 6x है और यहाँ 9x स्क्वायर है, वो y स्क्वायर है तो यहाँ y है, राइट. सो डिफरेंट, सो दे आर अनलाइक. हाँ, देन वो पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, ये तो लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है. ओके, वेरिएबल एंड पावर सेम तो लाइक टर्म. समझ गए क्या? ओके, सो स्टूडेंट्स, टिल हियर we study this chapter till here only. Okay, next time we will do from the exercise. So have a nice day. Thank you.